Okay, today we will start another part. Taxonomy part is more or less finished. The rest part, I will give you some notes on cladistics and uh, phonetics and all these things, little bit. And I will be actually now concentrating on another thing, that is, we will start with chordates. Introduction to chordates. So, what are chordates exactly? So, we will talk about them. Is it visible? Introduction to chordata, invertebrate chordates, vertebrates. दिखाई दे रहा है? Yes, sir. আ- Visible. Yes, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে একবার জিজ্ঞেস করে নিতে হয় एक बार अगर नहीं पूछ लेता ना तो दिक्कत हो जाता है एक बार बहुत बार एक बार क्या दो तीन बार हुआ है मुझे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ कोई कुछ बोला नहीं और स्क्रीन शेयर करना भूल गया मैं सो let us start with this picture. Characteristics of a chordate. So this is a typical diagram of a invertebrate chordate, you can call. They have got a notochord, dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slits, blocks of muscles. Now, if we look at a chordate, three most important characteristics can be seen. प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, ये येलो स्ट्रक्चर के नीचे तुम ये दिख रहा है एक ये कलर लाइट येलो, Yes, sir. दैट इज द नोटोकॉर्ड. This notochord is when we were embryos, we also had notochord. This notochord later got modified into the vertebral column, हम लोग का रीढ़ की हड्डी, and we became vertebrata. But before vertebrata, there are some animals where this notochord it exists even in the adult stage. So they are not like the echinoderms where there is no notochord, or other invertebrates. They have got a strong structure called as notochord, which provides support to the body. Body firm हो गया. Invertebrates पे you have seen that the nerve cord there was a ventral nerve cord and a dorsal nerve cord. ठीक है? But when you come to chordate, a great thing which you see is the presence of a this मोटा वाला येलो, the dorsal nerve cord. हम लोग का रीढ़ के हड्डी के अंदर से ये this dorsal nerve cord goes and it ends ऊपर में ब्रेन में. ठीक है? So there it was ganglia here. We presence of a dorsal मतलब पीठ के साइड में, ऊपर के साइड में. From there you have the brain coming. And another important thing is mouth के बाद you have this pharyngeal gill slits. हम लोग का अभी we don't have it right now. এখন আমাদের নেই, কিন্তু যখন তুমি মায়ের পেটের মধ্যে এমব্রিও ছিলে you had this disappeared and you had this larynx. So at one stage of the life or not, you will have a notochord, dorsal hollow nerve cord, notochord, dorsal hollow nerve cord, and pharyngeal gill slits. ঠিক আছে? Clear? हाँ सर. It can be in the larva, adult में चला जाता है. And
Other important characters, not that critical as these three, is the presence of post anal tail. एनस के बाद एक पूंछ. हाँ, पहले क्या होता था इन्वर्टिब्रेट में, यहाँ पे ही एनस हो जाता था, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे एंड होता है, लेकिन यहाँ पे एनस के बाद देर इज अ पोस्ट एनल टेल, एक पूंछ के तरह रहता है. देर इज अ टेल, एक ল্যাজ এনাসের পর. And another other characters will be presence of these muscle segments. Muscle segments contract করলে they move this way, that way, this way, that way. These are the characteristics of chordates. This notochord is stiff but flexible. It provides internal studies support. It remains throughout the life history of most invertebrate chordates, or among present only in the embryos of vertebrate chordates. So here it's only present in the embryos. Then you have the dorsal tubular nerve cord. এই ওপরে. It is present in chordates throughout embryonic and adult life. Then you have these pharyngeal gill slits. They develop in adult fishes, gill slits develop into true gills. In reptiles, birds, and mammals, gill slits are vestiges occurring only in the embryo. এখানে একটা পেয়ার্ড ওপেনিং, এখানে খাবার যায়, খাবার ফিল্টার হয়ে এখান দিয়ে জলটা আবার বেরিয়ে আসে, জলটা যায় খাবারের সঙ্গে ফিল্টার হয়ে বেরিয়ে আসে. There is a thing known as chordate metamerism. Like in annelids, you had seen that internal structure they repeat itself. In chordates, you also see this. In the cephalochordates and vertebrates, you will see that these muscles are segmented. দেখো এই মাসলের এই যে লাইনস গুলো পর 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 এসে যাচ্ছে, pharyngeal slits গুলো পর পর আসছে. So there is a type of chordate segment metamerism. এই যে ব্লকস অফ মাসলস তুমি দেখছো, এই মায়োটোমস, এই ব্লকস অফ মাসল সেগমেন্টস, দিজ আর নোন অ্যাজ মায়োটোমস. দে সারাউন্ড দ্য নোটোকর্ড অ্যান্ড দ্য নার্ভ কর্ড, and presence of post anal tail. Now let us have a look at the invertebrate chordates. Invertebrate chordates দু রকম আছে, subphylum Cephalochordata, subphylum Urochordata. There is also another group known as hemichordata or balanoglossus. Now this hemichordate, we will talk about hemichordates later. They don't have a notochord. They have only pharyngeal gill slits. So out of the major chordate characteristics, they are not present, but one chordate characteristic of pharyngeal gill slits is present. So they have also been called as half chordate or hemichordates. But you also have cephalochordates and urochordates. Cephalo matlab sir, head. So their notochord extends into their head. And euro means tail. So their notochord is in the tail only. So that you have these two invertebrate chordates. So if you look at the subphylum Cephalochordata Amphioxus, you will see they are known as lancet also. এই হাতের মধ্যে দেখছো এই ল্যান্সেটটাকে দিখাই দে রে ল্যান্সেট. हाँ सर. This is how small it is. You will see one in our college lab. You will see even in Kulti College, Amphioxus is present. They retain all chordate characters throughout their life. That is notochord, dorsal tubular nerve cord, pharyngeal gill slits, muscle myotomes. बॉडी में देखोगे यहाँ पे एक्सट्रैक्शंस है, ये वी शेप ऐसे करके खच 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 करके है. You will find them. This is you see a repeat of all these structures here. They are exclusively marine animals. They are capable of swimming, but they are buried in the sand with only their anterior end exposed. এই যে
amphioxus lancets. They are filter feeders. उन लोग का जो माउथ होता है, if you look, this is an oral hood with tentacles. So water enters through that. পানি ঘুষতা है, জল ঢোকে। হ্যাঁ, আর এই যে দেখো এরা ছাকনি হিসেবে छलनी जैसे काम करता है, oral hood with tentacles. They filter where the water comes inside and the large particles are removed, smaller particles come inside. There is a wheel organ. This wheel organ is attached with cilia, and the movement of the cilia brings the water inside. And now inside the pharynx, the food particles are captured. Also gill slits are there, and gill slits with gill bars, মানে gill को support करता है gill bars, হ্যাঁ gill কে support করে। এবারে এখানে জলটা খাবারটা ঢুকে খাবারগুলোকে টেনে নেয় আর জলটাকে এক্সট্রা জল বার করে দেয়। অক্সিজেন এক্সচেঞ্জ অলসো টেক্স প্লেস ওভার হিয়ার and food goes inside. Then you can see the notochord, dorsal nerve cord, মায়োটোম, এই মাসেল ফ্র্যাগমেন্টস দেখতে পাচ্ছ। অ্যানাসের পর ইউ হ্যাভ আ কর্ডাল ফিন, আ পোস্ট অ্যানাল টেল ইজ প্রেজেন্ট। এই যে খাবারটা ঢুকে ইন্টেস্টাইন দিয়ে অ্যানাস দিয়ে বেরিয়ে গেল। ক্লিয়ার অন দ্য হাউ সিফ্যালোকর্ডেটস লুক লাইক? Yes, हेलो, sir. ओके। क्या कैशान समझ में आया ये यस स्ट्रक्चर? सर। আচ্ছা, ঠিক है ঠিক है। আর ইয়ে জ্যোতি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হুম, এটা কি একটা টুং করে আওয়াজ এলো, দাঁড়াও এক সেকেন্ড। कोई टुंग से कोई आवाज किया, पता नहीं कौन किया। एनीवे डजंट मैटर। अच्छा, नेक्स्ट यू हैव दिस यूरोकॉर्डेटा, पूंछ में नोटोकॉर्ड रहता है। एडल्ट फॉर्म में यू विल सी थिंग्स लाइक दिस। चाइनीज लोग ये खाते हैं। हाँ, यहाँ से एक घुसने वाला ये एक पोर, ये रहता है और एक यहाँ पे रहता है एक ओपनिंग, ये बैग जैसा रहता है। चाइनीज लोग खाते हैं इसको। मैं बाद में पिक्चर दिखाऊंगा। ट्यूनिकेट, चिली चिकन जैसा बनाता है, चिली ट्यूनिकेट। ओके, बाद में दिखाता हूँ। ये एस्केप क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, এই যে एस्केप हुआ है। I will show you some picture of tunicates. चिली ट्यूनिकेट। ये देखो ट्यूनिकेट से बहुत ये बना रहा है। फ्राई करके खाते हैं ट्यूनिकेट सूप। दिखाई दे रहा है ट्यूनिकेट का सूप? Yes, sir. ये लोग खाते हैं, चाइनीज लोग। सो दे आर नोन एज ट्यूनिकेट्स और सी स्क्वाट्स। यहाँ से पानी पुश करके छोड़ देता है।
दे आर, ये इन लोग में कोई नोटोकॉर्ड भी नहीं है, नर्व कॉर्ड भी नहीं दिख रहे एडल्ट फॉर्म में, बट व्हेन दे आर लार्वा दे पोजेस ऑल द लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स। और सिर्फ एडल्ट में क्या है, सिर्फ फेरिंजियल पाउच रहता है, बाकी सब कॉर्डेट कैरेक्टर्स, बाकी सब कॉर्डेट कैरेक्टर गायब हो जाए। They are marine animals. Some species are solitary, others are colonial. They are sessile as adults, but motile during the larval stages. They possess all five chordate characteristics as larva. उन लोग का क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। तो कॉर्डेट्स आर मोर एडवांस्ड, नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, फेरिजियल इनवर्ट, वी आर मोर एडवांस्ड देन द कॉर्डेट्स। As chordates we are more advanced, so than invertebrates, but suddenly what happens, ये लोग फ्री स्विमिंग लार्वा, इट हैज गॉट अ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड सब पूंछ के इस साइड में है, कॉर्डेट टेल हार्ट है, फेरिंजियल गियर स्लिट्स है, फ्री स्विमिंग लार्वा घूमता फिरता है, मूवेबल है। देन सडनली वो बैठ जाता है, इट लूजेज इट्स नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, एंड सिर्फ फेरिंजियल गियर स्लिट्स रहता है, और इट बिकम सेसाइल, एक जगह पे बैठ जाता है, इट सिट्स इन वन प्लेस, একটা জায়গায় গিয়ে বসে যায়। তাহলে এই যে মেটামরফোসিস হচ্ছে, মেটামরফোসিস এর চেঞ্জ ইন ফর্ম ফ্রম অ্যাডাল্ট টু, ফ্রম লার্ভা টু অ্যাডাল্ট, একটা ফ্রি সুইমিং লার্ভা উইথ কর্ডেট ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে একটা ইনভার্টিব্রেটের মতন সেসাইল একটা জায়গায় গিয়ে বসে পড়লো, শুধু ফ্যারেঞ্জিয়াল গিল স্লিটসটাই রইলো অ্যাডাল্টের। এইটাকে দিস ইজ নোন অ্যাজ রেট্রোগ্রেসিভ মেটামরফোসিস। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে। Adult body is covered by an outer envelope of tunic, and this material is tunicin. এদের দেখতে এখান থেকে ইনকারেন্ট সাইফন আছে, ওয়াটার এন্টার্স ফ্যারিঞ্জিয়াল গিলস্লিটস থেকে খাবার টাবার ফিল্টার হয়ে খাবারটা এখানে, ফুড এন্টার্স ইনটু দি স্টমাক, then it goes here, it comes and it comes out from the anus, and the excess water comes out from this excurrent siphon, and then this pharyngeal lies in a chamber known as atrium. Clear structure ta? Is the structure clear? Yes, sir. Okay. So these are just notes for you to study. Now we come to the subphylum vertebrata. Yeah, vertebrata में क्या है? You have a रीढ़ की हड्डी, पेटे मेरुदंड, vertebral column or spine is present, cranium or skull that protects the brain is present, endoskeleton composed of bone or cartilage, and they have all the characters of chordates. Who are the chordates? We are the chordates. We will talk about these things in the next semester, origin of chordates. We don't have it in this semester. Okay. We are the chordates. Basically, vertebral columns is present. And therefore, from the chordates, we are even more advanced than the chordates. We are vertebrates. रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इन लोग का क्या होता है, कार्टिलेजिनियस होता है। Okay. So this is an introduction to chordates. Next day we will go into more details with the chordates. More details with chordates. So समझ में आया ये questions? Any questions? संजना? सर कौन सा पार्ट बोले नेक्स्ट सेमेस्टर में है? Origin of chordates. Today introduce किया है chordates. Next day we will discuss in details about your some chordate features. ठीक है? ओके सर। Okay. क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ,
तब बोल सकते हो? तो कॉर्डेट का 3 फीचर क्या हो सकता है, तुम बोल पाओगे तो, अगर कोई पूछा तो? यस सर। ठीक है, ये कभी भूलना नहीं, वाइवा में ये सब चीज पूछता है और स्टूडेंट्स आंसर नहीं देते हैं और टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ओके, बाय बाय देन। ओके सर, थैंक Bye, bye, sir. Bye, Thank sir. you.